Hello everyone, welcome to English Elegance. Today we will talk about audience research. So let's start with an example. So there was a mother and there was a child. तो जो मदर है वो अपने बच्चे को लेकर एक फेयर में जाती है, एक मेले में जाती है. एंड जब वो लोग वहाँ पे एंटर करते हैं, मदर अपने चाइल्ड को, अपने बच्चे को बड़े बड़े जाइंट व्हील्स और झूले दिखाती है और बोलती है लुक एट द व्हील्स, वो कितने बड़े हैं. तो बच्चा जो होता है ही वॉज नॉट एंजॉइंग, ही वॉज क्राइंग. वो उसको थोड़ा सा और आगे लेके जाती है और बोलती है कि देखो वहाँ पे कितने कलरफुल बैलून्स हैं. देन बच्चा अगेन ही वॉज नॉट एंजॉइंग, ही वॉज रादर क्राइंग. तो वो थोड़ा सा और आगे जाती है और वो अपने बच्चे को टॉयज की शॉप दिखाती है कि देखो वहाँ पे कितने प्यारे प्यारे टॉयज हैं. बट बच्चा ही स्टिल वॉज क्राइंग एंड ही वॉज सेइंग मुझे घर जाना है, आई वॉन्ट टू गो बैक होम. देन सडनली मदर देखती है दैट जो बच्चे का शूलेस होता है दैट वॉज ओपन एंड वेन शी सिट्स डाउन शी टाइज द नॉट, वो उसको बांधती है एंड देन शी रियलाइजेस कि बच्चे को तो एक्चुअली में जो मेला था वो दिख ही नहीं रहा है, बिकॉज जो बच्चे का हाइट था दैट वॉज स्मॉल एंड बच्चे को सिर्फ और सिर्फ लोगों के क्राउड दिख रहे थे. राइट. सो देन उसको पता चलता है एंड देन शी अपने बच्चे को वो अपने लैप में लेती है, अपने लेवल तक लेके आती है. एंड देन बच्चे को जब सारी चीज़ें दिखती हैं, कलरफुल बैलून्स, द जाइंट व्हील्स एंड द टॉयज, नाउ ही वॉज हैप्पी एंड ही वॉज क्वाइट ओवरवेल्म्ड. वो बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है दैट आई वॉन्ट टू बी हेयर, आई डोंट वॉन्ट टू गो होम एनी मोर. So, with this example, what do you understand? So, we understand that अगर हम लोगों को समझना चाहते हैं, we want our audience to understand our point of view, so we have to go to their level. हमारे audience में there will be different types of people coming from different age groups and different perspectives. So we have to keep a check that हमारी audience की understanding हम समझें, वो लोग हमसे क्या चाहते हैं, their need, and everything goes in time. Right. So अभी हम लोग exactly क्या चाहते हैं. Before giving any presentation, you have to check that you have to think about from your audience's point of view. Like what is the understanding of your audience and आप उनको कैसे tackle करोगे. Right. So basis होता है इसका that you have to do before your presentation, you have to do the research of your audience. So today I will give you a formula with which you can do your best presentation. So you just have to remember the letters of the word audience, that is AUDIENCE, the 8-letter words audience. So let's get started. The first word is A. A stands for analysis. You have to do the analysis of your audience, that what is the size of your audience, like is it a small group of people which is coming for your speech or presentation, like it's a 15-20 people, or it's a big audience that is 100 to 200 people. So you have to do analysis and you have to present yourself accordingly. Then comes the second word U. U stands for understanding. Understanding in the sense जो भी audience आपके पास आई है, जो आपका प्रेजेंटेशन टॉपिक है, आपकी ऑडियंस को उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, क्या उनको उस टॉपिक पे कोई एक्सपीरियंस है, सो दैट यू कैन यूज सम एग्जाम्पल्स एंड वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग. आप उनके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग यू कैन यूज सम सेट पॉइंट्स, जो भी आप पॉइंटर्स यूज करना चाहते हो. देन कमिंग टू द थर्ड लेटर, दैट इज डी. डी स्टैंड्स फॉर डेमोग्राफिक्स. Demographics can be in the form of age, gender, locality. So I'll give you an example. Agar there is a age group of 40 to 50 years in your crowd, in your audience, and you are given an example of school or a college student, so that will be inappropriate. So you have to give examples and experience according to the age groups, the locality and of the gender. जैसे कि आपके यहाँ कितने males हैं, कितने females हैं, so that you can give certain examples so that वो उसको relate कर सकें. Right. Then coming to the fourth letter, that is I. I stands for interest. So you have to check out, is your audience interested in you or the presentation you are giving to them? क्या वो लोग interested हैं आपकी बात सुनने में? So you have to make
a connection with your audience. You have to build a rapport. आपको उनसे एक rapport build करनी है जिससे वो आपसे connect कर सके and they listen to you very carefully, right? And you create a bond with them as well. Then coming to the fifth word, that is AUDI, then ENCE. E stands for expectations. Expectations like आपकी audience को आपसे क्या क्या expectations हैं. Maybe example, there's a person and he's going to watch a movie of his favorite celebrity, and he purchases the ticket, and when he goes to the hall, उसको एक cartoon movie दिखा दी जाती है. So what will happen? He'll not go to the expectations, he will be disappointed, right? So आपकी ऑडियंस को आपसे जो भी एक्सपेक्टेशंस है, आप अप टू द मार्क एक्सपेक्टेशंस पे जा रहे हो, so you have to make that in mind and present your speech and presentation accordingly to the expectations of your crowd, your people. Then coming to the next word, that is N. N stands for need. What is the need of your audience? आपकी ऑडियंस जो है उनकी नीड क्या है, so that you can talk, उनके आप रेलेवेंस में बात कर सको. हाउ यू कैन रिलेट योर ऑडियंस टू द नीड, राइट? दैट मीन्स नीड. नाउ AUDIEN, 2 letters left, CE. C stands for customization. Customization means, for example, in your audience, there are few people who don't know English, like they are not so good in English in understanding, so you can customize for them some content in Hindi so that they will like that. You can make the customization as well. So sometimes it happens that you have to make customization at certain point of time, and you should not be rigid, you should be flexible for that, right? And then the again last word is E. E stands for the expectation is already done. Second E is for environment. Environment means wherever you are giving the presentation, आपको जो presentation है वो कौन से place पे हो रहा है. For example, वो एक classroom है, वो एक बड़ा सा seminar hall है, या फिर एक वो auditorium है. So that you can plan your presentation style, जो भी आपका pattern है style करने का. Maybe you can, if there is a like bigger space, you can just walk through and you can present your views. या फिर अगर ज़्यादा classroom है, छोटा सा place है, then you can stand up and just you can stand on the podium and you can have a word with them, right? So these were all the 8-letter words of audience with which you can do your audience research. So अभी हम लोग एक डिटेल में नहीं बात करेंगे बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा. What we can do, जो भी हम लोग के पास जो भी आइडियाज आते हैं, राइट, जो आइडियाज आते हैं उनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं. सो हाउ वी विल बी कनेक्टिंग टू आवर ऑडियंस, दैट वाज ऑल अबाउट द ऑडियंस रिसर्च. So let's have a quick recap. What is the audience? AUDIENCE, audience research. Audience represents A for analysis, U for understanding, D for demographics, I for interest, E for expectations, N for need, and C for customization, and last E for environment. So this was all about the audience research. You just have to research your audience before going for a presentation. Thank you. And by the time, keep learning with English Elegance.